aspiring pharmacist and want to practice in Australia? Then we welcome you to Elite Expertise, where we turn ambitions into success for pharmacists worldwide. Elite Expertise is founded by Arif Sir and Harika Ma'am. Harika Ma'am is a highly qualified clinical pharmacist and educator at Monash Health Hospital in Melbourne, Australia. With 5 years of experience as an aggregated consultant pharmacist and a member of SHPA, the Society of Hospital Pharmacists Australia. She excels in preparing students for exams. Harika is passionate about interactive education, aiming to empower students to become effective pharmacists for optimal patient outcomes. Are you an aspiring pharmacist and want to practice in Australia? Then we welcome you to Elite Expertise, where we turn ambitions into success for pharmacists worldwide. Elite Expertise is founded by Arif Sir and Harika Ma'am. Mr. Arif Mohammed is a skilled clinical pharmacist at Northern Health Hospital in Melbourne, Australia. He brings 5 years of teaching experience and mentorship to students. Certified as a consultant pharmacist, he focuses on home medication review to minimize issues in community and hospital settings. A pharmacist immunizer and a member of the Society of Hospital Pharmacists of Australia. Arif Sir is originally from India. He has a robust background as a hospital preceptor and lecturer in Malaysia before relocating to Australia. His dedication to advancing clinical expertise shines through his impactful teaching and practice-based knowledge. Hello all. Today I'm here to introduce you to the Elite Expertise YouTube channel, a valuable resource for pharmacists worldwide. Our videos comprehensively outline the examination pattern and migration process to countries such as Australia and Canada. Additionally, we provide you information about the exam fees, examination pattern, passing score, and much more. Our channel offers full-length video on various topics like asthma, the autonomous nervous system, and heart failure with complete and in-depth therapy discussion and case studies. We regularly provide timely updates for pharmacists planning international migration. To ensure that you don't miss any crucial information, we invite you to visit and subscribe to the Elite Expertise YouTube channel. Thank you. Are you an overseas pharmacist aspiring to practice in Australia? By following these 6 steps, you can navigate the path to become a registered pharmacist in Australia. Step 1. Get your skill assessment done with Australian Pharmacy Council. Step 2. Clear your KAPS exam. Step 3. Register with OPRA as an intern pharmacist. Step 4. Start your internship and clear both intern written and oral exam after completing 75% of your intern hours. Step 5. Complete the intern training program and 1,575 hours of supervised practice. Step 6. Get registered with OPRA as a fully licensed pharmacist. At Elite Expertise, we are there for you at every step of your journey. Let our guidance and expertise make your dream of becoming a registered pharmacist in Australia a reality. Join Elite Expertise and begin your journey to success today.
Are you an aspiring pharmacist and want to practice in Australia? Then we welcome you to Elite Expertise, where we turn ambitions into success for pharmacists worldwide. Elite Expertise is founded by Arif Sir and Harika Ma'am. Harika Ma'am is a highly qualified clinical pharmacist and educator at Monash Health Hospital in Melbourne, Australia. With 5 years of experience as an aggregated consultant pharmacist and a member of SHPA, the Society of Hospital Pharmacists Australia. She excels in preparing students for exams. Harika is passionate about interactive education, aiming to empower students to become effective pharmacists for optimal patient outcomes. Are you an aspiring pharmacist and want to practice in Australia? Then we welcome you to Elite Expertise, where we turn ambitions into success for pharmacists worldwide. Elite Expertise is founded by Arif Sir and Harika Ma'am. Mr. Arif Mohammed is a skilled clinical pharmacist at Northern Health Hospital in Melbourne, Australia. He brings 5 years of teaching experience and mentorship to students. Certified as a consultant pharmacist, he focuses on home medication review to minimize issues in community and hospital settings. A pharmacist immunizer and a member of the Society of Hospital Pharmacists of Australia. Arif Sir is originally from India. He has a robust background as a hospital preceptor and lecturer in Malaysia before relocating to Australia. His dedication to advancing clinical expertise shines through his impactful teaching and practice-based knowledge. Hello all. Today I'm here to introduce you to the Elite Expertise YouTube channel, a valuable resource for pharmacists worldwide. Our videos comprehensively outline the examination pattern and migration process to countries such as Australia and Canada. Additionally, we provide you information about the exam fees, examination pattern, passing score, and much more. Our channel offers full-length video on various topics like asthma, the autonomous nervous system, and heart failure with complete and in-depth therapy discussion and case studies. We regularly provide timely updates for pharmacists planning international migration. To ensure that you don't miss any crucial information, we invite you to visit and subscribe to the Elite Expertise YouTube channel. Thank you. Are you an overseas pharmacist aspiring to practice in Australia? By following these 6 steps, you can navigate the path to become a registered pharmacist in Australia. Step 1. Get your skill assessment done with Australian Pharmacy Council. Step 2. Clear your KAPS exam. Step 3. Register with OPRA as an intern pharmacist. Step 4. Start your internship and clear both intern written and oral exam after completing 75% of your intern hours. Step 5. Complete the intern training program and 1,575 hours of supervised practice. Step 6. Get registered with OPRA as a fully licensed pharmacist. At Elite Expertise, we are there for you at every step of your journey. Let our guidance and expertise make your dream of becoming a registered pharmacist in Australia a reality. Join Elite Expertise and begin your journey to success today.
aspiring pharmacist and want to practice in Australia? Then we welcome you to Elite Expertise, where we turn ambitions into success for pharmacists worldwide. Elite Expertise is founded by RF Sir and Harika Ma'am. Harika Ma'am is a highly qualified clinical pharmacist and educator at Monash Health Hospital in Melbourne, Australia. With 5 years of experience as an aggregated consultant pharmacist and a member of SHPA, the Society of Hospital Pharmacists Australia. She excels in preparing students for exams. Harika is passionate about interactive education, aiming to empower students to become effective pharmacists for optimal patient outcomes. Are you an aspiring pharmacist and want to practice in Australia? Then we welcome you to Elite Expertise, where we turn ambitions into success for pharmacists worldwide. Elite Expertise is founded by Arif Sir and Harika Ma'am. Mr. Arif Mohammed is a skilled clinical pharmacist at Northern Health Hospital in Melbourne, Australia. He brings 5 years of teaching experience and mentorship to students. Certified as a consultant pharmacist, he focuses on home medication review to minimize issues in community and hospital settings. A pharmacist immunizer and a member of the Society of Hospital Pharmacists of Australia. Arif Sir is originally from India. He has a robust background as a hospital preceptor and lecturer in Malaysia before relocating to Australia. His dedication to advancing clinical expertise shines through his impactful teaching and practice-based knowledge. Hello all. Today I'm here to introduce you to the Elite Expertise YouTube channel, a valuable resource for pharmacists worldwide. Our videos comprehensively outline the examination pattern and migration process to countries such as Australia and Canada. Additionally, we provide you information about the exam fees, examination pattern, passing score, and much more. Our channel offers full-length video on various topics like asthma, the autonomous nervous system, and heart failure with complete and in-depth therapy discussion and case studies. We regularly provide timely updates for pharmacists planning international migration. To ensure that you don't miss any crucial information, we invite you to visit and subscribe to the Elite Expertise YouTube channel. Thank you. Are you an overseas pharmacist aspiring to practice in Australia? By following these 6 steps, you can navigate the path to become a registered pharmacist in Australia. Step 1. Get your skill assessment done with Australian Pharmacy Council. Step 2. Clear your KAPS exam. Step 3. Register with OPRA as an intern pharmacist. Step 4. Start your internship and clear both intern written and oral exam after completing 75% of your intern hours. Step 5. Complete the intern training program and 1,575 hours of supervised practice. Step 6. Get registered with OPRA as a fully licensed pharmacist. At Elite Expertise, we are there for you at every step of your journey. Let our guidance and expertise make your dream of becoming a registered pharmacist in Australia a reality. Join Elite Expertise and begin your journey to success today.
Are you an aspiring pharmacist and want to practice in Australia? Then we welcome you to Elite Expertise, where we turn ambitions into success for pharmacists worldwide. Elite Expertise is founded by Arif Sir and Harika Ma'am. Harika Ma'am is a highly qualified clinical pharmacist and educator at Monash Health Hospital in Melbourne, Australia. With 5 years of experience as an aggregated consultant pharmacist and a member of SHPA, the Society of Hospital Pharmacists Australia. She excels in preparing students for exams. Harika is passionate about interactive education, aiming to empower students to become effective pharmacists for optimal patient outcomes. Are you an aspiring pharmacist and want to practice in Australia? Then we welcome you to Elite Expertise, where we turn ambitions into success for pharmacists worldwide. Elite Expertise is founded by Arif Sir and Harika Ma'am. Mr. Arif Mohammed is a skilled clinical pharmacist at Northern Health Hospital in Melbourne, Australia. He brings 5 years of teaching experience and mentorship to students. Certified as a consultant pharmacist, he focuses on home medication review to minimize issues in community and hospital settings. A pharmacist immunizer and a member of the Society of Hospital Pharmacists of Australia. Arif Sir is originally from India. He has a robust background as a hospital preceptor and lecturer in Malaysia before relocating to Australia. His dedication to advancing clinical expertise shines through his impactful teaching and practice-based knowledge. Hello all. Today I'm here to introduce you to the Elite Expertise YouTube channel, a valuable resource for pharmacists worldwide. Our videos comprehensively outline the examination pattern and migration process to countries such as Australia and Canada. Additionally, we provide you information about the exam fees, examination pattern, passing score, and much more. Our channel offers full-length video on various topics like asthma, the autonomous nervous system, and heart failure with complete and in-depth therapy discussion and case studies. We regularly provide timely updates for pharmacists planning international migration. To ensure that you don't miss any crucial information, we invite you to visit and subscribe to the Elite Expertise YouTube channel. Thank you. Are you an overseas pharmacist aspiring to practice in Australia? By following these 6 steps, you can navigate the path to become a registered pharmacist in Australia. Step 1. Get your skill assessment done with Australian Pharmacy Council. Step 2. Clear your KAPS exam. Step 3. Register with OPRA as an intern pharmacist. Step 4. Start your internship and clear both intern written and oral exams. मुझे तो आवाज नहीं निकल रहा मैं बोल रहा हूँ
Hello. Yes, Tinku sir, you are audible. You can start. You can initiate. Your voice is not. Hello. Yes, am Am I audible? audible to you? Yes, you are audible. You are audible. But your voice is not audible. Just go to your microphone speaker mode. Just change it to your headphone. Audible. Yes. May I start? Yes, definitely you can start now. Okay. So, good afternoon to everyone. Welcome to our seminar today. Welcome to one seminar today. Okay. First of all, I introduce myself, Dr. Tinku Gupta from Orlean College of Pharmacy. So now let me introduce my director, sir, Dr. Manas Kumar Das, and our dean, sir, Dr. Mujahidul Islam, sir, from Orlean College of Pharmacy. And being a coordinator of this event, it gives me an immense pleasure to extend a very warm welcome to all of you present here on behalf of the entire Orlean College of Pharmacy, Greater Noida. I would also like to express our gratitude to our esteemed speaker, Mr. Arif sir, and his team who have accepted our invitation to provide over this seminar on scope of pharmacy practice in abroad or global career opportunities after B pharmacy or after completing the B pharmacy course, yeah, undergraduate course. So let's begin this journey of learning and discovery together. I wish you very thankful to you for being here. So, sir, Mr. Arif sir, welcome you on behalf of to our students, our faculty members, our dean sir, our director sir, and our students. So please welcome and share your views with us. Thank you very much. Thank you, Dr. Tinku Gupta, for this wonderful introduction. And now we are having our admin ma'am, and she's going to initiate the session. So, hi everyone. So, a warm welcome to the distinguished pharmacists who are present over here. And thank you for giving such a beautiful introduction. And I am really KAPS qualified, working as an admin manager of Elite Expertise. So, today I'm thanking each one of the faculty members, principal of College of Pharmacy, for collaborating with Elite Expertise. Elite Expertise is an online education platform which is founded by our directors, Mrs. Hariga and Mr. Harif Mohammed. So they both are working as a clinical pharmacist in Australia. They are basically from India, that is from Hyderabad. They have more than 5 years of experience in KAPS training. And we have recently started PEBC coaching. And we also have intern pharmacist return exam and oral exam coaching as well. And also we started PT. And also we have started OPRA coaching as well. So now we will present a small video of Harif sir, where he will explain what is KAPS all about. Yes, before starting of this meeting, I would like to say one thing. And this meeting is a very interesting meeting. And और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि आज से पहले कभी ऐसा इवेंट किसी कॉलेज में हुआ नहीं है. आप लोग बहुत लकी हो. यू शुड थैंक यूर कॉलेज मैनेजमेंट एज वेल एज डॉक्टर टिंकू गुप्ता, जिन्होंने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है कि आप इस वेबिनार को आज अटेंड कर रहे हो. मुझे ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज के बारे में 12 इयर्स के बाद पता चला, अपनी बी फॉर्म करने के बाद. तो आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, बहुत लकी हैं आप लोग. एंड गिव यू स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर टिंकू गुप्ता, जिन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी दी, हमारे साथ कोलैबोरेट करने में हेल्प किया, और आज आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हो. ये सेशन बड़ा ही यूजफुल सेशन रहेगा. इस सेशन में हम आपको
ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताएंगे कि कौन सी कंट्री है, उस कंट्री का कौन सा क्वालिफाइंग एग्जाम है। जैसे आप यूएस जाना चाहते हैं तो कौन सा एग्जाम है, कनाडा के लिए कौन सा एग्जाम है, क्या क्राइटेरिया है, क्या आपको करना है, कितने बार ये एग्जाम्स होते हैं साल में, प्रिपेयर करने के लिए कितनी टाइमिंग आपको चाहिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या एग्जाम है, अभी रिसेंटली बड़े चेंजेस हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के एग्जाम को लेके, उसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। न्यूजीलैंड के लिए के न्यूजीलैंड को लेके क्या नए प्रोस्पेक्टिव्स हैं, तो हम सभी के बारे में आपको बताएंगे। इसके बाद जो इंटर्नशिप की कितने आवर्स हैं, कैसे आपको इंटर्नशिप मिलेगी, वीजाज के क्या ऑप्शंस हैं, कब आप यहाँ से माइग्रेट करेंगे, कंप्लीट माइग्रेशन प्रोसेस के साथ हम आपको इस सेमिनार के अंदर बताएंगे। तो आप इस सेशन को बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ी ही इंफॉर्मेशन इसमें आपको मिलने वाली है। और अभी एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा आरिफ सर का। इस वीडियो में आपको जितने भी ग्लोबल एग्जाम्स हैं उनके बारे में, और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड के जो एग्जाम्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताया जाएगा। क्योंकि यूके के लिए बेसिकली फॉर्म डी की जरूरत पड़ती है, यूएस के लिए भी फॉर्म डी की जरूरत पड़ती है। तो यूएस की कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे हमें बी फॉर्म प्लस एम फॉर्म के बेसिस पे हम जा सकते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास ज़्यादा जो ऑप्शंस हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हमारे लिए बेस्ट ऑप्शंस हैं। तो हम इन कंट्रीज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में ज़्यादा बात करेंगे। अभी सर का एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स पे टाइप करते रहिए, साथ साथ हमारी टीम, टेक्निकल टीम आपको साथ साथ भी कोशिश करेगी इसको रिवर्ट करने की। और हम 1-to-1 जो क्वेश्चन है हम ऑनलाइन भी क्वेश्चन देंगे। और आप सबसे जितने लोग व्यूअर हैं, आप देख रहे हैं, आप सब लोग जो है एक बार अपना कॉलेज का जो आपका नाम है और साथ में अपना रोल नंबर जरूर टाइप करें, सो दैट कि हम देख सकें कि ये जो अटेंडेंस है ये ऑर्लिन कॉलेज ऑफ फार्मेसी से आ रही है। थैंक यू। आशुतोष, कैन यू प्लीज प्ले द वीडियो? Ashutosh, can you please play the video? One minute, guys. There is some signal issue. मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में इस एग्जाम के बारे में बताना चाहूंगा। ये जो जितनी भी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज हैं, ये सभी अपॉर्चुनिटीज जो हैं ये आपको ओवरसीज आपकी प्रोफेशनल जर्नी को ट्रैवल करने में आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी। आपको बेसिकली अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि आपका 8 सेमेस्टर का रिजल्ट जब आता है तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से, जो आपकी हेल्थ यूनिवर्सिटी, बेसिकली जो आपकी यूनिवर्सिटी है यूपी से, आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो आपकी अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी के नाम से कोई यूनिवर्सिटी आपकी, तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी से ट्रांसक्रिप्ट मंगानी है, जो कि एक थोड़ा सा कई मैक्सिमम टाइम जो है चैलेंजिंग टास्क नहीं होता है। तो वो आपको यूनिवर्सिटी से ट्रांसक्रिप्ट मंगाने के बाद फिर आपको पासपोर्ट और अपने जितनी आपकी जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन है, इसके साथ आपको अप्लाई करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। ये मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ फिलहाल आपके साथ। ऑस्ट्रेलिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे कैंडिडेट पोर्टल बनाकर ये 3 डॉक्यूमेंट्स, ट्रांसक्रिप्ट, पासपोर्ट, अपनी जितनी भी आपकी डीएमसी है, डिटेल मार्कशीट है आप जो आपकी, और साथ में आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन, इन सब चीज़ों के साथ आपको अप्लाई करना है कैंडिडेट पोर्टल में। और जब ये आपका ये वाला आपका सिस्टम हो जाए, इसके बाद देन आपको जो है स्किल असेसमेंट के लिए, बेसिकली इस प्रोसेस का नाम है स्किल असेसमेंट। आप अपने डॉक्यूमेंट्स की इवेल्युएशन कराते हो ऑस्ट्रेलिया के लिए और न्यूजीलैंड के लिए, और दोनों की ही जो बॉडी है, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी जो है वो एपीसी है, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी और न्यूजीलैंड के लिए भी। पर आपको स्किल असेसमेंट दोनों के लिए अलग से करानी है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए विलिंग है तो आपको स्किल असेसमेंट ऑस्ट्रेलिया की फार्मेसी काउंसिल से करानी है। अगर आप न्यूजीलैंड जाने के लिए विलिंग है तो आपको यही असेसमेंट अपनी न्यूजीलैंड की फार्मेसी काउंसिल से करानी है। रेस्ट जो प्रोसेस है एग्जाम का बुक करने का वो बिल्कुल सेम है, और एग्जाम जो है वो आपका दोनों कंट्रीज के लिए वैलिड है। तो अभी आई थिंक शायद अभी कनेक्टिविटी का भी कुछ इशू है, तो जैसे ही ये रिजोल्व होता है डेफिनेटली आई विल लेट यू नो। तो आपको
बेसिकली सबसे पहले जितने भी आपके लिए आपके जो ग्लोबल एग्जाम्स हैं, आपको उन एग्जाम्स का स्क्रीनशॉट ले लेना है। वहाँ पे क्या पे आउट है, आपको पर आवर कितने चार्जेस मिलेंगे, वहाँ पे आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इन द मेन टाइम आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप साथ के साथ भी चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो यूट्यूब पे चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। जो लोग इसको जूम के माध्यम से देख रहे हैं तो वो लोग इसको जूम पर भी दे सकते हैं। हम आपके क्वेश्चंस को 1 to 1 लेंगे और आपके जो जितने भी क्वेश्चंस हैं आरिफ सर ऑनलाइन आएंगे और वो सभी के क्वेश्चंस को ऑनलाइन लेंगे। तो आप लोग बिल्कुल पेशेंस बना के रखें और इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। आशुतोष, प्लीज प्ले द वीडियो। डबल टैप, स्क्रीन बढ़ाकर, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट। Hello everyone, my name is Arif Mohammed. I'm one of the directors as well as the lecturers at Elite Expertise. So Elite Expertise is a online training platform where we give the training for all the licensing examinations for Australia, New Zealand, Canada, US, UK, Ireland, and so on. And myself, I'm a consultant pharmacist in Australia, as well as I'm a clinical pharmacist here in Australia. I'm working as a clinical pharmacist in one of the hospitals known as the Northern Health Hospital in Melbourne. And at the same time, I'm also a consultant pharmacist here. So at first, I would like to share a few things with you regarding our Elite Expertise, who we are and what we do exactly. So I would like to share a slide with you guys. So, this is our website of Elite Expertise, www.eliteexpertise.com.au. So this is the homepage of our website, and just a brief background about the Elite Expertise. So we started Elite Expertise back in 2023, and like 2023 was the year that we have started Elite Expertise, and we have started with the training for Australian licensing examination. And we both are the teachers. So myself, Arif Mohammed, and Haika Bimawarpu. So we both are the directors and the teachers at Elite Expertise. So I'm working at Northern Health Hospital in Melbourne, and Mrs. Harika, she is working in Monash Hospital in Melbourne. So we both are the directors and we both are the main teachers at Elite Expertise. And so these are the courses that we offer to our candidates. So what is the KAPS examination essential course? So this KAPS examination course is for those who are planning to move to Australia. So initially they need to sit for the exam that is known as the KAPS exam. But now they have replaced it with going to replace it with a new exam, which is known as the OPRA exam. So that I will explain you it in the upcoming slide. So they are going to replace with the OPRA exam starting from March 2025. So November 2024 will be the last batch for KAPS examination, but starting from March 2025, it will be replaced with the new exam that is known as the OPRA exam. So we also provide the training for the OPRA exam. We already started the batches for the OPRA exam as well. And at the same time, we also provide the training for the intern pharmacists, those who are doing the internship here in Australia. So intern pharmacist written examination as well as intern pharmacist oral examinations. And we started Elite Expertise back in 2023, and our first batch of Elite Expertise, they had their examination in July 2023, and with the success rate of 90% was the success rate of Elite Expertise in the first batch. So around 89 candidates have cleared their examination in July 2023. Then our second batch of candidates, they did their KAPS examination in November 2023 with their success rate of 94%. Total 99 candidates have cleared their exam in November 2023. Then our third batch was in March 2024. So total 121 plus candidates, they have cleared the KAPS examination in March 2024 with a success rate of 94%. And recently, in July 2024,
Again, the fourth batch was done, and total 130 candidates have cleared their KAPS examination in July 2024. So this is about the candidates, those who have cleared the KAPS examination from Elite Expertise. So all the candidates, they have cleared the examination in their first attempt itself. And then at Elite Expertise, we also have all the free lectures. So we have got demo lectures which are available in our YouTube channel. And these demo lectures are also available on our website. So in case if you go to the Elite Expertise website, there you can see the demo lectures up over. Then if you click those the demo lectures, then you will come across all the demo lectures that are available, and you can watch the demo lectures. That with this you will come to know that how we teach, and also in this demo lectures we'll explain about what is the methodology that is implemented in the examinations, like what type of the questions that they ask in the licensing exams. So especially for the Australian licensing exam, as well as for the Canadian licensing exam, or for US NAPLEX exam. So the methodology, what they ask will be explained in detail in all those demo lectures. And then these are our testimonials from our students. So there are a lot of testimonials as well as on Google reviews. So once you can have a look through our testimonials and through Google reviews. And currently we are also providing the training for our intern pharmacists. So at the moment there are 40 plus intern pharmacists. They are getting trained with Elite Expertise. So we are providing the training for both the intern pharmacist written examination as well as for the intern pharmacist oral examinations. And we also have our Elite Expertise YouTube channel. So if you visit Elite Expertise YouTube channel, you will find a lot of videos that are available. So you will find videos of all the candidates, those who have cleared their KAPS examination. And you will also find a lot of information videos. And you will also find a lot of like clinical videos, so where we have provided a lot of information. And you can also see the demo lectures up over there. So you will find a lot of information from Elite Expertise YouTube channel. So please visit our YouTube channel, that is Elite Expertise YouTube channel, and you can have a look through all the videos that are available in the Elite Expertise YouTube channel. And regarding the global opportunities for pharmacists is concerned, so like I can say that for pharmacists, there are a lot of huge opportunities that are available. So for instance, myself, I did my bachelor and master's in India, as I mentioned at the beginning. So after doing the bachelor's and master's from India, then I cleared the Australian exam, that is the KAPS exam, and I moved to Australia, and now I started working as a clinical pharmacist. So in Australia, New Zealand, US, UK, Canada, Ireland, so in all these countries, there is a huge opportunity for the pharmacists to practice. So especially as a clinical pharmacist, if you are planning to practice as a clinical pharmacist, then in all these countries, it provides a very good opportunity. So for Australia, the exam that you need to take is the KAPS exam for till November 2024. It is KAPS examination, but starting from March 2025, the new exam pattern will be OPRA exam. So this OPRA exam is common for both Australia and for New Zealand. So for both the countries, the exam is the same exam, that is OPRA exam, starting from March 2025. And for US, you need to sit for the NAPLEX exam. So before NAPLEX, you need to go through FPGE, and after clearing the FPGE, then you need to sit for the NAPLEX exam. And for Canada, it is the PBC exam. So I will explain in detail about these exams in the upcoming slides. Then for UK, you need to do the OPRA, and for Ireland, it is the PSI exam. Okay. Then when it comes to the salary of the pharmacist in Australia as well as the US, in Canada, so here in this slide I have just briefly explained about the average salary of the candidate, that how much that they can get. So during internship in Australia, right now at the moment, so a candidate can get $27 per hour. It means that
soon after clearing the first part of the exam, whether it is the KAPS or OPRA exam, after clearing that exam, you need to start doing the internship for 1,575 hours in Australia. So while doing the internship, for each hour, per hour, you will be getting $27. And once after becoming a fully licensed pharmacist, in Australia, the pay rate will be 40 to 45, or even it will go up to 50 or $55, depending on the place that where you are ready to work, and depending on your experience, it will go even up to $55 in Australia. In US as well, for a fully licensed pharmacist, the salary for a pharmacist, it ranges between $50 to $70 per hour. Okay. So that is the US dollars, $50 to $70 per hour. But for Australia, the salary that I have mentioned is the Australian dollar, so $40 to $55 per hour. And in Canada as well, so once after becoming a fully licensed pharmacist, the average salary will go up to $45 to $55 per hour. So this is about the average salary of a pharmacist when once they become a pharmacist in these countries. And for full length video, like if you want to know in detail about what is the hourly rate and how it is calculated and so on, so I did a video on YouTube. So if you guys can, if you guys are interested, then you can just have a look through the through Elite Expertise YouTube channel, where you can find about what is the average salary for Australian pharmacist. And so this is the video that I made regarding the complete details about average salary for a pharmacist in Australia, where I have clearly mentioned about what is the salary that intern pharmacists that they get, and what is the salary that a fully licensed pharmacist, that is the fresher and experienced pharmacist, that they can earn in Australia. And also I have highlighted about what is the average salary of clinical pharmacist in Australia. So if you become a clinical pharmacist, then how much that you will earn in Australia. And at the same time, I also explained about the consultant pharmacist. So if you become a consultant pharmacist, then how much that you can earn in Australia. So everything that I have explained in this video. Then how should I start my journey for Australia? So in case, if you are planning to migrate to Australia, and if you want to become a pharmacist in Australia, then the first step that you need to do is you need to go for the document evaluation. So the first step is the document evaluation. So here you need to have, in order to do the document evaluation, you must have your passport, your university transcripts, and your pharmacy license. So if you have all these three documents ready with you, then you can start your document evaluation or the document verification process. So this document evaluation or the verification will be done by the Australian Pharmacy Council. Australian Pharmacy Council is the one that conducts this exam, that is the KAPS or OPRA exam. So from, as I mentioned, that from March 2025, it is getting changed to OPRA exam. So Australian Pharmacy Council will conduct this KAPS or the OPRA exam. So in order to give the eligibility for you to sit for this exam, at first they will ask your documents. Okay? So they will verify your documents, and if they are satisfied, then they will give the eligibility for you to sit for this exam. And at Elite Expertise, we help all the candidates to do their document evaluation. So we help them like starting from the first step onwards for document evaluation, we help the candidates for their initial document evaluation. Then after doing the document evaluation, they will get the eligibility to sit for the exam. So we also help the candidates to prepare for the licensing exam. And after clearing the licensing exam, we also support the candidates that what are the next steps that they need to do. Okay. So after clearing the KAPS, what is the next step that you guys need to do? So everything that we will support our candidates. And regarding this pharmacy license, in case if you don't have the pharmacy license, then you need to write a letter to the Australian Pharmacy Council by mentioning that I have applied for the pharmacy license, but till now I haven't received the pharmacy license. Then Australian Pharmacy Council will still give you the approval to sit for the exam. So this is the official website of Australian Pharmacy Council. So in order to begin your process
to migrate to Australia. So at first you need to create your candidate, you need to create your portal with Australian Pharmacy Council, and then you need to upload all the documents that are required. So the documents are nothing but the one that I have mentioned in the previous slide, that is your passport, your transcripts, and your license. So you need to upload all those documents. Once you upload all the documents and you make the payment, then Australian Pharmacy Council, the case officer, will go through all the documents and they will give the eligibility for you to sit for the exam. So it takes around 6 to 8 weeks time to get the eligibility to sit for the examination. And meanwhile, in case if the case officer need any further documents, then they will ask you to submit the other documents as well. So at Elite Expertise, as I mentioned, that all this process that we will help our candidates. So we will help our candidates to we will help all the candidates on behalf of our candidates. We will help to do the document evaluation, so that they need not to worry about what document that they need to submit and how to get this initial skills eligibility to sit for the KAPS examination or the OPRA exam. So they need not to worry. So we will do on behalf of them, and just they need to prepare for the exam. And then, as I mentioned, that after you submit all the documents within 6 to 8 weeks of time, the case officer will give you the approval to sit for the KAPS exam. So the KAPS exam is going to replace with the OPRA from March 2025. So before that, if you do the document evaluation and if you are planning to sit for the November exam, then you can sit for the KAPS. Otherwise, you can go with the OPRA exam for Australia. So this is the new exam that they are going to conduct. Again, it is from the official website of Australian Pharmacy Council. So the new exam is known as Overseas Pharmacist Readiness Assessment. It is known as Overseas Pharmacist Readiness Assessment, that is OPRA exam. So this is the exam that they are going to launch from March 2025. It means that all the overseas pharmacists, that is those who have studied from India or any other countries, so in order to become a pharmacist here in Australia, at first they need to sit for this exam. Okay. And at Elite Expertise, we provide the complete training for this examination, and like how we have got the success rate in the KAPS for the previous batches, for the 4 batches that I have displayed in the previous slide. So we are going to provide the complete training for this new program as well. Okay. And we already have started preparing all the content, and we are going to start our classes from this August 2024 for the new batch of OPRA. How to become a pharmacist in Australia. So I made a complete video. In this video, it is available, the full length video is available in our YouTube channel. So once, if you can go to this video, there you can find what are the steps which are involved. That is how you need to register with APC. So here in the previous slide, I have mentioned the first step is to go and register with the Australian Pharmacy Council, and then submit all the documents. And after submitting the documents, you will get the eligibility to sit for the KAPS exam. Okay. So all these steps in detail are explained in this video. So you guys can watch this video later on. So where we have, I have explained completely about the guide, the complete guidance, like how to register with Australian Pharmacy Council and how to upload all the documents and what is the fee for the exam. Okay, so KAPS exam fee and what are the other exams which are involved, that is the intern exams, and what is the fee for the intern pharmacist written exam as well as for the oral exam. So everything that I have explained in this video. So please go and watch this video later on. Then, so here, once you book your exam through Australian Pharmacy Council, then the next step is to sit for the exam. So in order to sit for the exam, at first you need to know what is the exam pattern and what is the syllabus and how much that you need to score in the exam in order to pass the exam, because there are 2 papers in the KAPS. One is the paper 1 and the other one is the paper 2. Then you need to know that how much you need to score in order to clear this KAPS examination. So I made a complete full-length video for the exam pattern as well as what is the syllabus for the KAPS exam and what is the score, what is the passing percentage, how much that you need to score in order to clear this KAPS exam.
in both the paper 1 and paper 2. So everything is clearly explained during our orientation session that we have recently conducted for our July batch candidates. And we have recorded this video, and this video is also available in the YouTube. Okay, so if you want to know that how the exam syllabus it will be, what topics are covered, and how the exam pattern it will be, how many MCQs will be there, and how much you guys need to clear in order to, how much you guys need to score in order to clear the paper. So everything is explained in detail in this video. So I recommend everyone to watch this video to know an overview about this KAPS exam, as well as the exam pattern, the syllabus, and how you get scored, and how much that you need to score in order to pass both the papers of KAPS exam, paper 1 and paper 2. And then, so after clearing the KAPS examination, so this KAPS examination, you can sit even from India. Okay? So in order to write this KAPS examination, you need not to come to Australia. So this exam, you can do it from India as well. So in India, almost all the major capital cities, they have got the center. So this exam will be conducted by Pearson. Okay, so Pearson will conduct this exam, and most of the cities in India, they have got the Pearson centers, and they are authorized to conduct this examination. It means that this first exam, the KAPS exam, you can clear from India itself. Okay. After clearing the KAPS exam from India, then you need to migrate to Australia. Okay, so in the second video, there is another video here. So what after the KAPS exam? So here I have clearly explained about what you guys need to do. So once after clearing the KAPS examination, so what is the next step? That is how you need to get registered in Australia as an intern pharmacist. Okay, so in order to get registered in Australia as an intern pharmacist, you need to get registered with OPRA. Okay, so what is OPRA? How to get registered with OPRA? So everything I have explained in detail, and the full length video is available in YouTube channel. So in case if you are interested to know about what is next after the KAPS, so how we need to get registered as an intern pharmacist, and how do we find the internship positions in Australia. So everything that is explained in this video. So you guys can go and watch this video where you will get the complete information. And to become a pharmacist in Canada, even Canada is also a very good country where there is a huge scope for the pharmacist to practice. And Canada is one of the countries where you can easily get the permanent residency when compared to US or Australia or New Zealand or any other countries, UK or any other countries. So getting a permanent residency in Canada is much easier than the other countries. So to become a pharmacist in Canada, again, there are few steps which are involved. Okay, so if you visit to our Elite Expertise website, so in the website we have, if you visit the website and if you go to the courses, in the courses you can see the PEBC course. So PEBC stands for the Pharmacy Examination Board of Canada. So PEBC is the one that conducts all the exams for Canada. So if you visit to our website, there you can go to the PEBC program or to the PEBC courses, and once after going to the PEBC courses, so just you need to scroll down the homepage and you will find what are the initial steps that are required. So what are the documents that are required to provide or what are the steps which are involved to become a fully licensed pharmacist in Canada. So even for Canada, at first, as we are qualified as everyone, as you guys are studying in India, and once after finishing your Bachelor of Pharmacy or finishing your PharmD, or even after finishing your Master's, so you need to write a basic examination that is known as the evaluating exam. So the first exam is the evaluating exam for Canada, PEBC. So at first you need to clear the evaluating exam. Then after clearing the evaluating exam, then the next exam will be the qualifying exam. Okay. So the qualifying exam will be, it consists of the two types. One is the qualifying examination, that is the MCQ based, that is the part 1, and OSCE, that is the part 2. So you need to clear both the qualifying examination. At first we need to clear the evaluating exam, then we need to clear
both the part 1 and part 2 of qualifying exam. So once we clear all these examinations, then we will get a certificate from PEBC that the candidate has cleared all the examinations. And based on that certificate, now you guys can start registering with the pharmacy board in Canada. Okay. So all the steps, if you need to know what are the steps which are involved, so just visit to our website. So in our website, we have clearly mentioned about what are the steps that are involved for Canada PBC. And even for Canada, we started our PBC training courses. So we started our PBC preparation course starting from July. That is last July. On 20th of July, we have started our first batch of PBC program. So we also help the candidates in doing the documentation evaluation for PBC, and we also help the candidates in preparing their licensing examination for PBC. And also we do further support for the candidates once after clearing the examinations, how to find out the internship and how to get registered as a pharmacist up there in Canada or even in Australia. So how to get registered as a pharmacist. So everything that we will provide the complete guidance and support to our candidates. These are the few things that I wanted to share with you guys. So Elite Expertise is an online platform where we give the training for all these countries, for Australia, New Zealand, Canada, US, UK, Ireland. Okay, so you guys can visit to our website, as well as don't forget to subscribe to our YouTube channel, because in our YouTube channel we provide a lot of information regarding the current scenarios, what situation is going on in these countries, as well as we provide demo lectures. Okay, and also we provide the career pathways, that is how the pharmacist opportunities will be there. So if you visit to our YouTube channel, then you can find a lot of videos where I have made the videos especially for the pharmacist career pathways in Australia, especially in the hospitals, how your pharmacist can work in the hospitals. Okay, so like there are different opportunities in the hospitals. Like for a clinical pharmacist, they can work as in chemotherapy specialist pharmacist, in as well as in cardiology specialist, neurology specialist, antimicrobial specialist pharmacist, mental health specialist pharmacist. So there are different specialties for the pharmacist are available. And in most of the countries, like in India, especially in India, so we are more fascinated to work as a clinical pharmacist after finishing our PharmD or after finishing our masters in, especially in clinical pharmacy or in pharmacology. So we are more fascinated to work as a clinical pharmacist. So I have explained the complete pathways, like how to become a clinical pharmacist in Australia. So all the full-length videos are available in Elite Expertise YouTube channel. So please don't forget to visit to our YouTube, subscribe to our YouTube, and also we have our Instagram and our Facebook, and my personal LinkedIn is also there. So please subscribe to Instagram, as well as follow us on Insta, Facebook, and you can also send a request to my personal LinkedIn, so that you will develop the connections for the future. Okay, in case if you are planning to migrate to any of those countries, so you can develop your very good connections. Okay, so thank you so much. And now our team members, so Ashita, she will give her presentation. Okay, thank you so much, guys. So hope you all understood regarding the KAPS exam coaching and PBC and everything. So if you have any questions, you can ask right now. Chat box is also open. So we are open for questions. Do you have any questions?
किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है. Chat box is open. Yes, Dr. Tinku. Please ask if you have any questions. Hello. Hello. Yes, Dr. Tinku. Yes. May Yeah, I hello. ask some questions from you? May I ask? Yes, Yes, please yes, ask. yes. Can you tell me the validity of that exam? Either we are moving for Australia or either Canada or any other country. So what is the validity of that exam? Either 2 years, 3 years, or 4 years, and more than 2 3 years. What is the validity of KAPS, OPERA, and PBC exam? Okay. So for KAPS exam and OPRA exam, there is no change in the validity. Validity is for 3 years, and for PEPC it is 5 years. 3 years and 5 years. Okay. And what about visa options after clearing that exams? So for KAPS exam or OPRA exam, you can, after writing both of the exams, you can try for PT, IELTS, or OET. With that, you can launch GOI, and after getting an invitation, you can apply for 491, 190, or and for 190 that also. And can you hear me? Hello? Yeah, sure. Yeah, you are audible. Yes, Yeah, audible. okay. So for PBC also there are certain PR visas available. And one more question from my side. Is there any work experience required for that exam? Is there any work experience? Is it necessary to work, have to work experience in pharmacy? For Yeah, any other? KAPS exam, KAPS, no, yeah, for KAPS and OPRA, there is no need of experience. You can apply as a fresher itself. But if you are planning to go to New Zealand, then you need experience. For PBC also, there is no need of experience required. Is there any high? Is there any weightage given to higher qualified students? Either maybe if one of the student has completed his BM pharmacy after B pharmacy, or any student have completed his PharmD or maybe PhD. So is there any weightage for that candidate either from B pharmacy? No, actually, everything is considered as same. But when you are applying for an internship, like you're trying for an internship in Australia, if there is an MPharm degree, you will be having a better priority. Okay, thank you, thank you. So, any other questions? Anybody else can ask? If you have any questions, please let me know. So the course fees is 1,700 AUD plus GST. That will be for KAPS coaching. And if you want us to do your skill assessment assistance, that also we will be providing, and that will be 200 AUD. And applying for internship, there is a question coming from YouTube that is asking for applying for internship. So after your KAPS exam, you can apply for a UI and then go to Australia with the visa 491, 190 or 407, whatever visa. And then you can search for, after going to Australia, you can search for internship, and you can do your APRA registration as well. And after registration, after getting your APRA registration, then your internship can be started. And after completing your internship, you will be having a written exam and an oral exam of internship. After clearing both these exams, you will be a registered pharmacist in Australia. मैम इन्होंने पूछा है, ऑनलाइन पूछा है यूट्यूब पे कि इंटर्नशिप को सर्च कैसे करें. बेसिकली माय डियर फ्रेंड, इंटर्नशिप आपको खुद सर्च करनी है. हम आपको लीड्स दे सकते हैं. बहुत सारी फेसबुक कम्युनिटीज हैं, बहुत सारे टेलीग्राम के चैनल्स हैं, जहाँ पे आपको जब भी कोई इंटर्न पोजीशन ओपन होती है तो डेफिनेटली अगर हमें पता चलता है तो हम डेफिनेटली अपने एलुमनाई स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं. तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इंटर्न पोजीशन का पता चले तो यू शुड बी सोशली वेरी एक्टिव एंड यू शुड हैव लिंक्डइन कनेक्शंस सो दैट यू विल कम टू नो अबाउट द इंटर्न पोजीशंस जो भी वहाँ पे ओपन हो रही हैं.
ऑस्ट्रेलिया में ऑलमोस्ट 5800 फार्मेसीज हैं, जो पर ये सभी फार्मेसीज जो है वो इंटर्न की पोजीशंस को ऑफर नहीं करती हैं, जिनके पास कुछ कुछ फार्मेसी ऐसी भी हैं जहाँ पे प्रोप्राइटर ही फार्मासिस्ट है और वो अकेला ही अपनी फार्मेसी को रन कर रहा है। और बहुत ही कम फार्मेसी हैं जहाँ पे आपको इंटर्न की पोजीशन देखने को मिलेगी। ये एक चैलेंज है, छोटा सा, छोटा नहीं है, बड़ा चैलेंज है, ये आपको खुद फाइंड आउट करनी है। और रीजनल एरियाज में प्रोबेबिलिटी जो है इंटर्नशिप मिलने की वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेट्रो सिटीज़। तो अगर आपको विलिंग है कि आपको इंटर्नशिप जल्दी मिले, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका फोकस कितना है, अगर आपकी डेडिकेशन कितनी है, कितनी कितनी शिद्दत से आप इंटर्नशिप को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप सोच रहे हो कि चलो लग जाएगी, ढूंढ लेंगे, मिल जाएगी, देन यू आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। अगर आप चाहते हो कि आपको इंटर्न पोजीशन जल्दी मिले, तो आपके फर्स्ट एफर्ट्स जो हैं वो इंटर्नशिप को ढूंढने में लगने चाहिए, चाहे आपको 15 दिन में मिल जाए, चाहे आपको 45 डेज में। बेसिकली एक फार्मेसी के इंटर्न को कंप्लीट होने में 12 महीने तक का टाइम लग जाता है, और जब तक एक इंटर्नशिप खत्म नहीं होगी सेकंड इंटर्न वहां पे ज्वाइन नहीं कर सकता। सो इट्स ए लॉन्ग प्रोसीजर। और अगर कोई फार्मेसी का ओनर आपको ओके करता है, यस करता है कि आप मेरे पास इंटर्नशिप कर सकते हो, मे बी वो आपको 3 मंथ से 4 मंथ्स का टाइम दे कि मेरे पास नेक्स्ट इंटर्न की पोजीशन 4 मंथ्स के बाद ओपन हो रही है, तो आप उसको यस करें, ओके करें, 4 मंथ तक वेट करें और अपनी इंटर्नशिप को शुरू करें। ऐसा नहीं है कि आज आप इंटर्नशिप के लिए गए और कल से आपको मिल गई, परसों से आपने उसको करना शुरू कर दिया। इसमें टाइम लगता है क्योंकि ये एक लॉन्ग प्रोसीजर है। जब आपकी भी इंटर्नशिप लगेगी तो आपकी भी 12 महीने तक चलेगी, लगभग 1 साल, क्योंकि 1575 घंटे 1575 आवर्स की जो इंटर्नशिप है। और एक वीक में हम 40 आवर्स तक की, मीन्स मंडे टू फ्राइडे अगर हम 8 घंटे काम करते हैं तो 40 आवर्स पर वीक हमारी इंटर्नशिप के काउंट होते हैं। तो अगर हम 4 वीक्स मंथ के भी कैलकुलेट करते हैं तो ये 160 आवर्स ही हम एक मंथ में कंप्लीट कर पाते हैं। तो ये इट्स ए चैलेंजिंग प्रोसीजर बट इट्स नॉट डिफिकल्ट। हमारी कैप्स की वैलिडिटी 3 इयर्स की है। इस कैप्स की वैलिडिटी के साथ जो है हम अपना जितना जल्दी हो सकता है अपनी इंटर्नशिप फाइंड आउट कीजिए और जल्दी से जल्दी इसको खत्म कीजिए। सर टिंकू सर, और क्वेश्चन है सर आपका कोई? टिंकू सर। Last question from my side. What is the syllabus for that exam? What is the syllabus? Syllabus. Yes, Tinku sir. Yes, ma'am. You Because can continue, ma'am. Continue, sir Raj. because sir has given 2 papers, paper 1 and paper 2. So either both the paper are relevant to the pharmacy exam or any other subject. Dr. Tinku, I would like to say one thing. कैप्स का जो एग्जाम है, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए जो एग्जाम का नाम है कैप्स, इस एग्जाम के लिए सिर्फ आपके पास 14 to 15 डेज हैं। अगर आप चाहते हो कि आप ओवरसीज कैप्स के एग्जाम के पाथवे से ऑस्ट्रेलिया जाएं, अगर आपने विद इन 15 डेज आपने अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई करते हो, देन ओनली यू कैन अपीयर फॉर कैप्स एग्जाम। मींस इट्स ए लास्ट 14 to 15 डेज। इसके बाद कैप्स अगर आप अप्लाई भी करते हो स्किल असेसमेंट के लिए, जो फर्स्ट प्रोसीजर है, आपका स्किल असेसमेंट 8 अक्टूबर से पहले पॉजिटिव होकर नहीं आएगा। इट मींस कि आप नवंबर में एग्जाम नहीं दे पाओगे। यू हैव टू गो फॉर ओपरा एग्जाम, जो नया एग्जाम का नाम आया है, ओवरसीज फार्मासिस्ट रेडीनेस असेसमेंट। तो हमें उस एग्जाम के लिए जाना पड़ेगा। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 15 डेज है। अगर बच्चे की डीएमसी 8 सेमेस्टर की अवेलेबल है, वो ट्रांसक्रिप्ट अपनी लेके आए और साथ साथ अप्लाई करे, तभी वो कैप्स का एग्जाम दे सकता है। इसके बाद देर इज नो मोर कैप्स। इसके बाद सिर्फ ओपरा रहेगा, न्यूजीलैंड के लिए भी और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी। अगर व्हेन इट कम्स टू सिलेबस, फिलहाल अगर जो कैप्स के सिलेबस की बात करें, इसमें 2 पेपर्स हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 के जो कंपोनेंट है 30 + 70 के कंपोनेंट में ये दोनों पेपर जुड़े हुए हैं। 100 नंबर का हमारा जो एग्जाम आएगा, इसमें 30% जो रेशियो है वो हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का है, और 70% का जो रेशियो है पेपर 1 में वो हमारा फार्माकोलॉजी है, सारी एपीएचई है सारी, और मीन्स की हायर स्टडीज हैं एपीएचई में। इसके बाद इस एग्जाम का जो पैटर्न है, हमें 30 में से 15 पॉइंट्स केमिस्ट्री में और 70 में से 35 पॉइंट्स हमें कोलॉजी में लेने हैं, सो दैट तभी हम इसको पेपर 1 को क्वालिफाई कर पाएंगे। पेपर 2 के साथ भी ऐसा ही है। पेपर 2 का जो कंपोनेंट है वो फार्मास्यूटिक्स है, और जो 30% का जो कंपोनेंट है रेस्ट, वो थेराप्यूटिक्स है। और थेराप्यूटिक्स में भी हमें 35 और हमें अपने स्यूटिक्स में 30 में से 15 पॉइंट्स स्कोर करने हैं, देन ओनली हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इस एग्जाम का यही चैलेंज है कि इसमें चारों कंपोनेंट में हमें 50% स्कोर करना है, तभी हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और
पर अब जो नया एग्जाम का पैटर्न आया है ओपरा का, उसमें हमें डायरेक्टली 120 क्वेश्चन आएंगे। 120 क्वेश्चन में से 10% जो क्वेश्चन है, मीन्स कि 12 क्वेश्चन जो है वो डमी क्वेश्चन रहेंगे। हमें नहीं पता वो कौन से डमी क्वेश्चन है, वो सिस्टम को पता है। उनकी उन 12 क्वेश्चन की स्कोरिंग नहीं होगी। आपने वो सही किए हैं तब भी, गलत किए हैं तब भी, आपके सिर्फ 108 क्वेश्चन ही स्कोर होंगे आउट ऑफ। और उस 108 क्वेश्चन में से आपको स्कोर करना है 70 प्लस, आपको स्कोर करना है 70। किसी को 70 करना है, किसी को 80 करना है। डिपेंड करता है कि आपका जो क्वेश्चन का सेट आपके पास आया है वो डिफिकल्ट है, हार्ड है, वो सिस्टम को पता है, या आपने फेस किया एग्जाम, या आपको पता होगा। मीन्स अब से पहले तक 50% जो है क्लियर था कि सब बच्चों के लिए 50% ही सब बच्चों ने स्कोर करना है। पर अब जो है पासिंग जो स्कोर है वो हर बच्चे के लिए अलग से है। तो ये थोड़ा सा एक नया अपडेट है। और जो हमारा ओपरा का जो एग्जाम है, इसमें भी कुछ सिलेबस में एडिशन हुआ है। कुछ क्लिनिकल फार्मेसी जो हमारी प्रैक्टिस बेस्ड हमें जो नॉलेज होती है, उसके एग्जाम, उसके क्वेश्चंस में कुछ बढ़ोतरी हुई है। और कुछ कंपोनेंट ऐसा है जो कम भी हुआ है। तो ओनली 120 क्वेश्चंस आएंगे, 108 स्कोरिंग रहेंगे उसमें से। और पासिंग जो पास परसेंटेज है वो भी हायर साइड रहेगी, 50% नहीं है, वो 70 भी रहेगी, 780 तक भी रहेगी। तो डिपेंड करता है कि किसके पास कैसा क्वेश्चन का सेट आया है, वो डिपेंड करता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो एग्जाम है अब एक टफ एग्जाम बन चुका है इसको अब। और अगर आप एक प्रोफेशनल की हेल्प नहीं लेंगे तो डेफिनेटली आप इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। और अगर आप डीपली चाहते हो कि आप इसके कंपोनेंट्स को, आप डीपली चाहते हो कि हम डीपली इसके कंपोनेंट्स को देखें कि क्या क्या कंपोनेंट है, तो सर का एक, जब जिस दिन ओपरा एग्जाम लॉन्च हुआ था, सर ने एक डिटेल यूट्यूब पे एक वीडियो डाला है। उसमें डूज डोंट क्या क्या होने वाला है कैप्स के बाद, उस सर सब कुछ सर ने जो है वो डिस्कस किया है डिटेल में। तो आप एक बार इस सर का वो यूट्यूब का वीडियो भी देख सकते हैं। वेरी इंफॉर्मेटिव, जितने भी मीन्स क्वेश्चन हैं, जितने भी क्लाउजेज हैं, वो बच्चों ने पुट किए हैं ऑनलाइन। हमने भी सर से कुछ क्वेश्चंस पुट किए हैं। तो वो डेफिनेटली थोड़ा सा लंबा वीडियो है, पर डेफिनेटली अगर आप 1.5x को इसको करके देखते हैं तो आपको डेफिनेटली जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसमें ओपरा एग्जाम को लेकर। So there are few questions from YouTube. So which is the best country for pharmacists on basis of career opportunities and salary? So I see like most of the countries have better opportunities and salaries in for pharmacists, like Canada, Australia, USA, everywhere. But every country also has its own difficulties. Like PBC is very hard, like exam is very difficult, but still you can pass it. Like if you study hard, you work hard, and then you can get it. For CAPS also, it's not very easy. You have to study, but it's not hard as PVC. So every exam and every country has its own challenges and its own difficulties. Nothing is very easy. So it's according to you which country you wanted to migrate. It's according to you. And if within 3 years, if we didn't get internship, then CAPS will expire. That's a question. So yes, if within 3 years, if you have not got an internship in Australia, your CAPS exam will be expired. So it's okay to get an internship in 2 years, 11 months also. If you get an internship, that will be okay. It's just that in 3 years, you have to find an internship. You should join for internship. So that is the only thing. So if you didn't get an internship in 3 years, definitely your CAPS exam will be expired. So that are the two questions from YouTube. Is there any other questions? इन जो आपका कैप्स का जो एग्जाम है, आप क्वेश्चन जो है कि क्या ये एक्सपायर हो जाएगा हमारा एग्जाम, हमें दोबारा अपीयर होना पड़ेगा कैप्स एग्जाम के लिए। देखिए माय डियर फ्रेंड, अगर आप अपनी माइग्रेशन प्रोसेस को लेके सीरियस हैं तो डेफिनेटली आप इस टाइम से पहले पहले ऑस्ट्रेलिया पहुंच भी जाएंगे और आपको इंटर्नशिप भी मिल जाएगी। अगर आप अपने माइग्रेशन को लेके सीरियस नहीं है तो डेफिनेटली ये 3 साल निकल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि राइट नाउ पोजीशन जो है वो थोड़ा सा टाइट है। बट ऐसा नहीं है कि इंटर्नशिप लग ही नहीं रही है, ऐसा नहीं है। आप जितने हाथ पांव मारते हो, जितनी डेडिकेशन से आप इंटर्नशिप ढूंढते हो, उतनी जल्दी आपको इंटर्नशिप मिल जाती है। लोग जो गए हैं वहाँ पे वो कर भी रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि वो लोग जो कर रहे हैं वहाँ पे इंटर्नशिप, उनको जाते ही इंटर्नशिप मिल गई है। उन लोगों ने अपने एफर्ट्स रखे, जारी रखे एफर्ट्स अपने, और डेफिनेटली उनको एक दिन इंटर्नशिप मिल गई और आज वो सब लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो इंटर्नशिप से पहले जो हमारे बेसिक चैलेंजेस हैं, वो हमारा पीटी का एग्जाम है, हमारा कैप्स का एग्जाम है। सबसे पहले बेसिक चैलेंजेस हैं, उसके बाद क्योंकि ये सब ओवरनाइट नहीं होने वाला है कि आज आपने कैप्स एग्जाम क्वालिफाई किया और आप एकदम से ऑस्ट्रेलिया चले गए, न्यूजीलैंड चले गए और आप एकदम से वहाँ पे इंटर्नशिप लग गई, आप फार्मासिस्ट बन गए, आप 4-5 लाख रुपए कमाने लग गए। ये ओवरनाइट नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। आपको एग्जाम का पैटर्न बदल चुका है, स्कोरिंग भी हार्ड हो गई है, तो डेफिनेटली ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब आप इस फर्स्ट स्टेप को क्वालिफाई करेंगे, सेकंड चैलेंज आपके लिए पीटी का एग्जाम है। जब आप पीटी के एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे और आपको अपना प्रोफाइल भी बेस्ट बनाना है, जब आप अपनी ईओआई लॉज करते हो तो आपका अगर अच्छा प्रोफाइल होगा तभी आपको इनवाइट आएगा। तो यू हैव टू अचीव 79+ जो है वो आपको अचीव करना है पीटी या आइल्स के अंदर। जब आपका वो अचीव होगा उसके बाद ही आप एक अच्छा प्रोफाइल बन पाएंगे, तभी वहाँ की स्टेट जो है वो आपको नॉमिनेट करेगी। बेटर है कि आप कैप्स का एग्जाम क्वालिफाई करें और एज ए फार्मासिस्ट काम करना जारी रखें इंडिया के अंदर। और जब आप इंडिया में काम करते हैं तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपका एक नंबर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मीन्स यू आर गेटिंग सैलरी इन योर अकाउंट। ड्रग लाइसेंस के अंदर आपका नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है फार्मासिस्ट स्टेट फार्मेसी काउंसिल का, वो मेंशन होना चाहिए। तभी वो आपके एक्सपीरियंस को भी मानेंगे कि ये लड़का या लड़की जो है ये इंडिया में काम कर रहा है। तभी उसी एक्सपीरियंस की वैलिडिटी के बेसिस पे ही आपको वैलिडेशन मिलेगी कि आपको कुछ पॉइंट्स भी मिलेंगे। अगर आपका 3 साल का इंडिया में एक्सपीरियंस है एज ए रिटेल फार्मासिस्ट तो आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं वीजा में, ईओआई में। अगर आपका 5 ईयर्स तक का एक्सपीरियंस है एज ए रिटेल फार्मासिस्ट तब आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपका 8 ईयर्स तक का एक्सपीरियंस है तब आपको 15 पॉइंट्स मिलेंगे। तो डेफिनेटली ये सभी पॉइंट्स आपको आपके प्रोफाइल को बेटर बनाने में हेल्प करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो इस रिकॉर्डेड सेशन को बाद में देख रहे होंगे, तो उनके लिए मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा। अगर आज आपको लगता है कि मेरी पॉकेट अफोर्ड नहीं कर रही है कि मैं आज ही अपना स्किल असेसमेंट कराऊं, आज मैं कोचिंग लेके आज पीटी की या कैप्स की या ओपरा एग्जाम की तैयारी करूं, मैं एग्जाम बुक करने की आज मेरी फैमिली कंडीशन ऐसी नहीं है। अगर आपका कभी भी ये मन बनता है, साल के बाद आपका मन बनता है कि 2 साल के बाद आपका मन बनता है कि मुझे ओवरसीज जाना है, तो डेफिनेटली आप सबके लिए एक बड़ा अच्छा मैसेज ये है कि आपका जो ये ड्यूरेशन है, जब आपकी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होती है उसके बाद से आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है एज ए फार्मासिस्ट। तो आप अपना एक हेल्दी एक्सपीरियंस जो है वो जरूर रखें, कायम रखें। आप किसी न किसी फार्मेसी में काम करें जहाँ पे से आपका एक्सपीरियंस काउंट होता रहे। आप अपने फंड्स को मैनेज कीजिए सो दैट कि आप ये सभी एक्सपेंसेस जो आपको ऑस्ट्रेलिया पहुंचने से पहले लगने हैं, आपका ये सब एक्सपेंसेस, ये सब फंड्स आपके पास अवेलेबल हो। तभी जो है ये एक इजी गोइंग प्रोसेस नहीं है कि आपने सोचा और ऐसे हो गया। जब आपके पास फंड्स होंगे तभी आप इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। पर डेफिनेटली जिस दिन आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हो ये फंड्स वहां जाके कुछ भी नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको ये सब कुछ एक महीने में आप वहां जाके अचीव कर लेंगे। कुछ कोचिंग सेंटर ऐसे हैं जो क्लेम करते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद 1 महीने के अंदर अपने सारे जितना भी आपने पैसा खर्चा है आप पूरा कर सकते हो। ऐसा नहीं है। जब आप एज ए इंटर्न ज्वाइन करते हो तो आपकी सैलरी इतनी अच्छी नहीं होती है। यू आर गेटिंग $24 to $27 पर आवर, और आपको एक वीक में सिर्फ और सिर्फ 40 आवर्स तक के ही पैसे मिलते हैं। अगर आपको और ज्यादा अर्न करना है, यू हैव फुल वर्किंग राइट्स, आप अदर वर्क भी कर सकते हो। पर आपकी जो इंटर्नशिप है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ 40 आवर्स पर वीक है। तो आप यहाँ से काउंट कर सकते हो कि आप एक मंथ में कितना अर्न करने वाले हो। आप वहाँ पे अच्छा अर्न करते हो तो वहाँ के एक्सपेंसेस भी उतने ही अच्छे हैं। आपका वहाँ का जो सबसे ज्यादा कॉस्ट है स्टे की कॉस्ट है। आप वहाँ पे अच्छा स्टे के लिए पे करते हो। आपको सेकंड जो है आपका फूड की कॉस्ट है वहाँ पे। दूसरा आपको इंश्योरेंस भी कराना पड़ता है वहाँ पे, आपका इंडिमेंट्री जो आपका एक प्रोफेशनल इंश्योरेंस होता है। अगर एज ए फार्मासिस्ट या एज ए इंटर्न फार्मासिस्ट आपसे कोई गलती होती है तो आपको आपकी प्रोटेक्शन के लिए एक इंश्योरेंस आपके बैक हैंड में काम कर रहा है। तो ये सब चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं वहाँ पे। और इंटर्न के ड्यूरेशन में आपकी सेविंग्स बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाओ। आप ऐसा अगर आप चाहते हो कि आप सपोर्ट कर पाओ अपनी फैमिली को तो यू हैव टू डू एक्स्ट्रा थिंग्स। आपको एक्स्ट्रा आवर्स काम करना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो ड्यूरिंग इंटर्न्स आवर। 1 साल तक आप सिर्फ हैंड टू माउथ जितने ही रहते हो और बहुत मिनिमम आपके पास सेविंग्स होती है। जब आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाते हो तब डेफिनेटली आपकी अर्निंग्स भी अच्छी होती है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड्स भी बढ़ता है। और एक क्वेश्चन ये था अभी यूट्यूब पे कि विच इज द बेस्ट कंट्री टू चूज फॉर ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज। अगर आप किसी एक अच्छी कंट्री के बारे में सोच रहे हैं तो आप यूएस के लिए एलिजिबल नहीं है।
क्योंकि अगर आपकी बी फॉर्म क्वालिफिकेशन है तो बी फॉर्म एलिजिबल नहीं है। बी फॉर्म प्लस एम फॉर्म अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो यूएस के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो, पर कुछ ही स्टेट्स में आप वहाँ पे काम कर सकते हो, हर स्टेट में आप काम नहीं कर सकते। आयरलैंड के लिए सोच रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि वो लोग कंटिन्यूअसली मिनिमम 5 इयर्स की डिग्री होनी चाहिए, जो यहाँ पे सिर्फ फॉर्म डी ही एलिजिबल है आयरलैंड में एज ए फार्मासिस्ट काम करने के लिए। तो हमारे पास अच्छी कंट्रीज में, और अगर आप यूके जाना चाहते हो, यूके में आपको सबसे पहले एडमिशन लेना पड़ेगा। आप जब एडमिशन लोगे, एडमिशन लेने के बाद जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा, उसके बाद आप ओस्पेप वगैरह का एग्जाम दे सकते हो, उससे पहले आप एलिजिबल नहीं हो। और जो उसकी एग्जाम की जो कॉस्ट है और उससे पहले जो कोचिंग की जो कॉस्ट है, आप एक हिसाब से स्टूडेंट वीजा की तरह ही आप यूके में जाते हो। अच्छा ऑप्शन है, बट लिटिल बिट लंबा प्रोसीजर है, थोड़ा सा आप जा सकते हो। जो बेस्ट कंट्रीज इसके बाद हमारे पास बचती है उसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड, ये 3 ऑप्शन हमारे पास अच्छे बचते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक वेस्टर्न कंट्रीज में आता है। वर्क लाइफ बैलेंस ऑस्ट्रेलिया का बहुत अच्छा है, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपनी पर्सनल लाइफ भी इंजॉय करते हो। आपको अगर आप एक्स्ट्रा टाइम काम करते हो, जो कि बेसिकली कम्युनिटी फार्मेसी में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो फार्मेसी 8 से 9 घंटे ही वर्क करती है। अगर आप किसी हॉस्पिटल सेक्टर में काम कर रहे हो, देन ओनली यू हैव द चांस टू वर्क एक्स्ट्रा इन योर फार्मेसी। अगर आपने कम्युनिटी फार्मेसी में आप इंटर्नशिप कर रहे हो, तो आपको अगर एक्स्ट्रा काम करना है तो आपको कुछ अलग काम करना पड़ेगा, आप अपनी फार्मेसी में अलग से काम नहीं कर सकते हो। तो ऑस्ट्रेलिया का जो एक एवरेज लाइफ स्पैन है वो ऑलमोस्ट 90 साल है, 90 ईयर्स। एक जो अंग्रेज है वो 90 साल तक जिंदा रहता है, एवरेज है। 100 तक भी रहते हैं, 100 प्लस भी रहते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप ऑस्ट्रेलिया जाएं, तो ऑस्ट्रेलिया आपकी भी जो पर्सनल लाइफ है वो भी बहुत हेल्दी होने वाली है। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं तो आपको मैक्सिमम टाइम मिलता है वहाँ पे उनकी कंट्री को सर्व करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ओल्ड एज पीपल बहुत ज़्यादा हैं। उनकी जो पॉपुलेशन है उसमें ओल्ड एज लोगों का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और सबको पता है कि अगर आप 70 ईयर्स प्लस हो तो आपको नर्सिंग असिस्टेंट चाहिए ही चाहिए। दैट्स वाई वहाँ पे नर्सिज और फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट हमेशा से ही रही है। और आने वाले टाइम में जो है वो भी वहाँ की फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट हम पूरी नहीं कर सकते। डेफिनेटली वीजाज में राइट नाउ कुछ चैलेंजेस हैं, अभी वीजाज इतने नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा स्लो है, पर डेफिनेटली ये हमेशा से ही ऐसा रहा है। जब भी वीजा के ऑप्शन खुलते हैं तो वो सडनली खुलते हैं, और सडनली जो है लोगों को इनवाइट्स आते हैं, सडनली लोग मूव करते हैं। और जब ये खुलते हैं तो अब आप वेट नहीं कर सकते कि अब वीजा खुले हुए हैं, अब आप अप्लाई करेंगे, तब जब आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो डेफिनेटली हो सकता है कि वीजा उस टाइम तक कुछ टाइम के लिए बंद हो। बेसिकली ये सब कुछ फाइनेंशियल ईयर पे डिपेंड करता है। जो इमिग्रेशन का फाइनेंशियल ईयर है वो 1 जुलाई से 30 जून के बीच में होता है। अभी फिलहाल नया फाइनेंशियल ईयर शुरू है और नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज इस टाइम ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया ने इस बार स्किल जितने भी स्किल्ड एम्प्लॉय हैं उनके लिए वीजाज के ऑप्शन बढ़ाए हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो इस बार स्टूडेंट वीज़ा मिलने के चांसेस कम हैं और स्किल्ड वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो डेफिनेटली ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस बार अगर आप चाहें तो नवंबर में कैप्स एग्जाम दे सकते हैं, पर इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि कैप्स का एग्जाम देने के लिए आपके पास पॉजिटिव स्किल असेसमेंट होनी चाहिए, जिसमें 6 to 8 वीक्स का टाइम लगता है। अगर आप चाहते हैं तो आप विद इन दिस वीक आप अप्लाई कीजिए, तभी आपकी स्किल असेसमेंट होके आ पाएगी। अदरवाइज आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बैठेगा, वो है ओपरा एग्जाम। और एक चीज, जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है, इन दोनों कंट्रीज के लिए कैप्स का एग्जाम और ओपरा का एग्जाम जो है वो सेम है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कैप्स का एग्जाम दें और हो सकता है कि आपका मन बदल जाए, मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना चाहता, मैं न्यूजीलैंड जाना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली आप इसी कैप्स के एग्जाम के साथ या इसी ओपरा एग्जाम के साथ आप न्यूजीलैंड में भी अप्लाई कर सकते हैं वहाँ के इमिग्रेशन पोर्टल के हिसाब से। इसके लिए आपको न्यूजीलैंड की स्किल असेसमेंट, न्यूजीलैंड की जो फार्मेसी काउंसिल है वहाँ से आपको स्किल असेसमेंट करानी पड़ेगी। जब आपकी स्किल असेसमेंट होके आ जाएगी, जब तब आप उनको अपना एग्जाम जो आपने ऑस्ट्रेलिया के लिए दिया था उसी एग्जाम को देके आप क्लेम कर सकते हो कि आई एम कैप्स क्वालिफाइड। तब वो आपको आपका कैप्स का रिजल्ट कंसीडर करेंगे और देन यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर न्यूजीलैंड एज वेल। एक एग्जाम से आप 2 कंट्रीज में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और किसी कंट्रीज में ऐसा नहीं है। अगर आप कनाडा जाना चाहते हो तो सिर्फ ईबीसी ही आपके पास एक ऑप्शन है, और कोई भी ऑप्शन 2 कंट्रीज के लिए सिमिलर नहीं है। जितनी अपॉर्चुनिटीज ऑस्ट्रेलिया में है उतनी ही अपॉर्चुनिटीज न्यूजीलैंड में भी है। दोनों सिस्टर कंट्रीज हैं,
सिस्टर कंसर्न कंट्रीज हैं, तो एक ही एग्जाम से आप दोनों कंट्रीज के लिए एलिजिबल होते हैं। मैम कोई और क्वेश्चन है? कैन यू सी ऑन यूट्यूब? टिंकू सर आपका कोई क्वेश्चन है सर? No, Rakesh, there is no questions from YouTube. पर बता दीजिए इसकी। टिंकू सर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू सो मच सर। जो बच्चे इस सेशन को ऑनलाइन नहीं देख पाए हैं, तो उनके लिए सेशन रिकॉर्डेड सेशन भी यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, तो डेफिनेटली जब भी उनको टाइम मिलता है वो इस सेशन को देख सकते हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि जो आपके एलुमनाई स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर पास आउट हुए हैं, आप इस सेशन का लिंक उनको जरूर भेजिएगा, सो दैट कि जब भी उनको टाइम मिले तो वो इस सेशन को सुन सकें, सो दैट कि उनको भी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिले कि जो जो हमारे लिए ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज हैं वो लोग भी इसको अचीव कर सके। डेफिनेटली आई विल डू। So we'll wind up, Rakesh. Is it okay? Yes ma'am, sure ma'am. Okay. So we also have our YouTube channel and Instagram, Facebook, and we are giving the link. Yeah, this is our Instagram link. So please subscribe to our channel so that you can see our new updates and all the informations that we are providing. And if you are like planning for a new course or anything, that will be updated in our channels: Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn. Every channels you can subscribe. And thank you so much, Dr. Tinku Gupta, for collaborating with us, and thank you for your time. Thank you for giving us a space to do a webinar in your college as well. Thank you very much Yeah. to Elite Expertise team, and thank you very much to Mr. Arif, consultant as a pharmacist, and you are sharing a very wonderful information with us, and you have given a lot of learning and knowledge which are very, very important for our students, our colleagues, which are currently searching a job in that area. Okay, so once again, I'm very thankful on behalf of Orlean College of Pharmacy. Thank you very much, especially to you and Mr. Rakesh Khan, because without both of you, that event has not been possible. Okay, so once again, thank you very much. Thank you so much. Thank you, Dr. Tinku. Thank you. Yeah. Welcome.